Good morning, children. Children, now today we are going to learn new topic from chapter percentage, money and metric measures as percentages. So, money measures or metric measures already we have learnt in metric measures and temperature. So now here we will learn as percentage, how to convert, how to find money and metric measures as percentages. Okay, so first we know that 100 पैसे is equal to 1 rupee. So 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब 1 रुपी. ओके, मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 ऑफ ए रुपी. मतलब अगर 1 पैसा है तो हम क्या बोलेंगे? 1 रुपी का कितना परसेंट है? 1%. वी नो दैट व्हाट इज परसेंटेज. न्यूमरेटर जिसके डिनोमिनेटर में 100 है उसके न्यूमरेटर को हम क्या बोलेंगे? परसेंट. इट मीन्स 1%. 1 पैसा इज इक्वल टू 1% ऑफ ए रुपी. मतलब 1 पैसे का मतलब क्या है? रुपी का कितना परसेंट? 1%. ओके, इफ इट इज 2 पैसे इट मीन्स 2% ऑफ ए रुपी. इफ 10 पैसे इट मीन्स 10 पैसे ऑफ ए रुपी. सॉरी, 10% ऑफ ए रुपी. अगर 40 पैसे हैं तो 40% ऑफ ए रुपी. ओके, सो जितने पैसे उतना परसेंट ऑफ ए रुपी. Got it? Now same we will see 100 centimeter is equal to 1 meter, or we can tell 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 centimeter is equal to 1/100 of a meter. सेम वैसे ही जैसे पैसे का हमने किया. अगर 1 सेंटीमीटर हम बोलेंगे तो किसके बराबर होगा वो? 1% ऑफ ए मीटर. 1 centimeter is equal to 1% of a meter. Okay, and if 8 centimeter it means 8% of a meter. 8 centimeter is equal to 8% of a meter. 30 centimeter is equal to 30% of a meter. मीटर का कितना परसेंट होगा? जितना सेंटीमीटर उतना परसेंट ऑफ ए मीटर. सेम इफ यू विल टेक केजी. अब केजी यू सी 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000. हम इसको परसेंट बोल सकते हैं? नो, बिकॉज वी नो दैट जिसके डिनोमिनेटर में 100 होगा वही परसेंट में काउंट होगा. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ ए kg. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू? दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे. इट मीन्स नाउ अगर 1 को 10 से डिवाइड किए तो 0.1, और 1000 को 10 से डिवाइड किए तो ओके. नाउ इन रफली आई विल शो यू. सो 1/1000 इट इज़. कितना है? 1/1000. हमें क्या करना है? नीचे वाले को क्या करना है? 100 करना है. क्या करना है? नीचे वाले को 100 में कन्वर्ट करना है. व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ वी विल डिवाइड बाई 10. ओके, सो 1/10 डिवाइडेड बाई 1000 बाई 10. सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. ओके, 1/10 इट मीन्स 0.1/100. नाउ वी कैन टेल इट इज़ ए परसेंट. कितना परसेंट है? 0.1% ऑफ ए kg. kg का कितना परसेंट है? 0.1%. सेम इफ इट इज़ इन मिलीलीटर वी विल काउंट. वी नो दैट 1000 ml इज इक्वल टू 1 liter. 1000 ml is equal to 1 liter. Yes, so 1 ml is equal to 1 milliliter is equal to 0.1%. क्यों? क्योंकि 1000 है. सेम दिस प्रोसेस वी विल फॉलो. सो व्हाट वी विल गेट? 0.1% ऑफ ए लीटर. इफ अगर ऐसा होता था 5 ml is equal to 0.5% ऑफ ए लीटर. ओके, इफ इट इज़ 12, अगर मैंने यहाँ पे 12 या 15 ml इज इक्वल टू 1.5% ऑफ ए लीटर. ऊपर और नीचे दोनों को क्या करना है? तुमको 10 से डिवाइड करना है. ओके, अगर 15 को हम 10 से डिवाइड किए तो क्या मिलेगा? 1.5 मिलेगा.
Got it, children? It's very easy to understand. Okay. Now next we will see finding percentage of a number. Next, finding percentage of a number. So one example is there that Rohit scored 25% in English. रोहित को कितना मिला? 25% in English. We don't know about maths, but we know that 25% मिला है उसको. किसमें? इंग्लिश में. So the marks were out of, total marks कितने थे? 60 थे. How many marks did he score? What we have to find? We have to find how many marks did he score. उसे कितने marks मिले थे? We know that 25% मिले उसको, but marks we don't know. Now how to calculate? So we'll write Rohit scored 25% of 60. 60 का कितना मिला है उसको? 60 में से 25% मिला है. 60 के 25% उसको मार्क्स मिला है. Okay, so how we will write? We will write like this, that 25% of 60 is equal to, we know that what is 25%? 25% it means 25 by 100. Okay, 25% it means 25 divided by 100 of 60 means into 60. This form we will write it in this form. Okay, so now we'll see this 0 0 will get cancelled. Now 5 ka table if we will see, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Now here 2 1s are 2, 2 3s are 6. Okay, so नीचे में 1 है, ऊपर में 5 into 3, it means 15. So Rohit scored 15 out of 60. We will write here in answer that Rohit scored 15 out of 60 in English. Okay, कितना मिला उसको? 15 out of 60. It means 60 में से उसको कितना मिला है? 15 मिला है. Very easy it is. Now next example we'll see. So now children, next example. So I have taken example from you all. Okay, so I have taken Stacy. Okay, Stacy scored 29 out of 30 in SST. So अभी आपने एग्ज़ाम दिया टर्म 1 में, टर्म 1 का. सो टर्म 1 में स्टेसी को कितने मिले SST में? 29 out of 30. So what percentage is this? So what is her percentage in SST? That we have to find out. Okay, so let's start. So Stacy scored 29 out of 30. So we can write like this, that 29 out of 30 so is equal to 29 divided by 30 into 100%. Okay, so now we'll solve. So this 0 will get cancelled. So up we will see 29 into 10. So 29 into 10 divided by 3. Okay, so 290 divided by 3. Okay, now we will see what is her percentage. So what we will do, we will divide 290 by 3. So what is the answer? 96.67%. So Stacy scored, so what we will write, that Stacy scored 96.67% in SST. Okay, got it? It's very easy. So first if you are having percentage,
and you have to find out the mass. So what we will do, we will write like this: 25 by 100 into 60. Okay, means out of mass we will multiply here. Okay, this is our formula. But if already mass are there, you have to find out the percentage. So what we will do, we will write like this, that out of mass or mass obtained by out of mass into 100. So you will get the percentage. Okay, so very easy children. Again, if you are having any doubt, again and again you see the video. Okay, you will get it clear. So I will solve one example from your exercise. So now we have to take out 25% of rupees 500. Okay, so let's start. Already percentage is there. We have to find out the rupees. So what we will do, if percentage means 25 divided by 100 into 500. Okay, this 0 will get cancelled. 25 5s are 125. So what is the 25% of 500? It's 125. Very easy. If I'll take, if we have to find out the percentage, this is first example, this one is second. From B I am taking 12 of 60. It means out of 60, one boy or one girl, she got 12. What will be the percent that we have to find out? We have to find out the percent. So let's start. So 12 by 60, because out of 60 it is, into 100 we will do percentage. So this 0 will get cancelled. The table of 2 if we'll go, 6 1 ja 6, 6 2 ja 12. Okay, we can reduce this, 6 2 ja 12. Now up we are getting 2 into 10. It's in percentage. What is your percentage? 20%. If you are getting 12 out of 60, it means how many percentage you are carrying? You are getting the 20%. Okay, so very easy. Still, if you are getting or having any doubt, anytime you can ask me. Okay, thank you. Have a nice day.